आपण जदि डिफाइन करिवे एबे जदि मीडिया कहा भाई लिखुची बोले लेट्स ड्रॉ ए लाइन गोटे प्रोफाइल के हम रीडर्स किए रीडर्स देखिबा बोले प्रिसाइजली एबे न्यूज़पेपर मैगजीन्स below 34 years बोधे 60% of readers. Look at Times of India, look at Indian Express, look at any Odia newspapers. It talks more about air pollution, it talks about snowfall in Odisha, it talks about number of disasters. आपण का जेते जदि मिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर आपण देखिबे तो बिगिनिंग रू माने वर्तमान पर्यंत भी ताको जो फ्लैगशिप ग्लोबल स्टेटमेंट अच्छी सब जाक एनवायरमेंटल ताको भाई पब्लिक रिलेशन ही पड़ते इज एंटाइटल्ड टू डू दैट किंतु इट डज टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स प्लांटेशन इज द सॉल्यूशन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स आर प्रिसाइजली डूइंग दैट सो दे आर क्लियरिंग गुड फॉरेस्ट एंड डूइंग प्लांटेशन आल्सो इट्स नॉट अ ओडिशा स्टोरी इट्स अक्रॉस द मीडिया रोल अपन देखिबे बोले मीडिया सब बेले इन्फ्लुएंशियल थिला पब्लिक ओपिनियन रे सब बेले इन्फ्लुएंस होता तो सही रोल एबे भी होची किंतु सडनली एबे कहा पाई लेखिला में दी चारटा क्वेश्चंस आ इंडिया रे बर्तन जेंती चलसी बोधे दीटा साइड ही अछंती लाइफ रे मोदी और द गोदी मीन स्विच ओवर गए जो भी माने अपन जा भी जान तो इधर अपन प्रो मोदी किंबा एंटी मोदी किंबा ओडिसा रे एंटी नवीन पटनायक किंबा प्रो नवीन पटनायक तेलंगाना रे अपन सेटा बेसिकली आम डिविजन आमर किसी आइडेंटिटी एबे अलग प्रकार में तो कहा पाई लिखिबा क्वेश्चंस एथि पाई भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कि एटा को मान को पाई अपन लिखिबे कि अपन मोदी और एंटी मोदी न होबे प्रो एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट न होबे ओ को आइडेंटिटी रे रहबे अपन जदि डिफाइन करिवे एबे जदि मीडिया कहा भाई लिखुची बोले लेट्स ड्रॉ ए लाइन गोटे प्रोफाइल के हम रीडर्स किए रीडर्स देखिबा बोले प्रिसाइजली एबे न्यूज़पेपर मैगजीन्स below 34 years बोधे 60% of readers आ ता संगे संगे इंडिया भी बहुत बड़े यंग आछी दूसरा देखिए बोले आउ जो फेसबुक किंबा सोशल मीडिया पर्टिकुलरली फेसबुक रे काई फेसबुक अलाउ यू टू रीड आल्सो फेसबुक बोधे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड रिपब्लिक वर्तमान वर्ल्ड चाइना पाखापाखि पॉपुलेशन था इंडिया ठू अधिक है पॉपुलेशन और फेसबुक एते बढ़िया रिपब्लिक एते ऑर्गेनाइज्ड बट विदाउट ए रूलर एवरीबॉडी इज ए रिपोर्टर विदाउट ए एडिटर एवरीबॉडी इज ए फोटोग्राफर विदाउट ए फोटो एडिटर everybody can say something can react something and that's precisely where we are also targeting it we cannot escape from so the point I am making is that कहा पाई लिखिबा जो क्वेश्चन अछि हमें प्रिसाइजली गोटे यंग पॉपुलेशन यंग कंट्री आउट यंग वर्ल्ड मु जस्ट आगु कहतली कि बोले वर्ल्ड रो एते यंग कभी केबे भी नथिला वी आर द यंगेस्ट वर्ल्ड नाउ नेवर बिफोर इन हिस्ट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन रे भी एते यंग वर्ल्ड नथिला जे 60 प्लस पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन सही भाया स्थिति रे लिखिबे कि देखिबे समान को बेसिकली हमें लिखुछु नाउ का ऊपर लिखुछु दैट्स अनदर बिग क्वेश्चंस जदी इतनी यंग आउ हमें रेस्टलेस डेफिनेटली यू कैन सी इट मु डाउन टू अर्थ मैगजीन रे काम करे आमो से मैगजीन रो बायसेस अछि से मैगजीन रो बायसेस एटा ले कि हम एनवायरनमेंट आउट डेवलपमेंट ऊपर हम फोकस्ड मैगजीन बट ये मैगजीन इलेक्शन भी कवर करे क्राइम भी करे वीराप्पान ऊपर भी लिखे दारा सिंह ऊपर भी लिखी छी बिफोर काउ बिकम समथिंग बिग सब ऊपर लिखबे किंतु दीटा ऊपर लिखे तो कौन ऊपर लिखु छु नॉट ए क्वेश्चन फॉर मी बट आई विल आर्ग्यू दैट जेते बेले डाउन टू स्टार्ट इतला 1992 रे से टाइम रे एनवायरनमेंट सब सीनियर्स माने एग्री करिवे इट वाज नेवर इट वाज सो कॉल्ड
not mainstream, side stream, for some people, and particularly the journalists like us, where they are just, I think, well up enough to spend time on writing on environment. But it is no more the case. Look at Times of India, look at Indian Express, look at any Odia newspapers. It talks more about air pollution, it talks about snowfall in Odisha, it talks about number of disasters. In fact, Times of India daily edition sometimes devotes 2 pages a day on air pollution, climate change. Why we write actually more about which delegation going to COP with conference of parties where climate change, UNFCCC, Kimba, अपन देखी थी आरसीपी ऊपर इंडिया रो जो अभी चलता मोर देन ट्रेड सही टाइम रे सब मीडिया रे अपन देखी थी कि डिस्कशन होतला कि स्मॉल फार्मर्स स्मॉल डेयरी फार्मर्स तार इंटरेस्ट एटा इंटरेस्ट तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी एबे एक्चुअली एनवायरमेंटल इधर आउ अपन का जेते यदि मिस्टर मोदी जे प्राइम मिनिस्टर अपन देखिबे तो बिगिनिंग रू माने वर्तमान पर्यंत भी ताको जो फ्लैगशिप ग्लोबल स्टेटमेंट अच्छी सब जाक एनवायरमेंटल ताको भाई पब्लिक रिलेशन ही पड़ता इज एंटाइटल्ड टू डू दैट किंतु ही डज टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम ही लाइज आल्सो बट ही डज इफ यू लुक एट इट जते बेले एनवायरमेंट मेनस्ट्रीम हलानी कौन लेखिबाटा भी आल्सो डिफाइन करछि तो सही टाइम रे जो फर्स्ट क्वेश्चन आछि कि कौन पाए Jokes apart, I think we are journalists, we are professional communicators, if not writers. किंतु अबे जो misunderstanding होची, I think, topics, subjects. मु biases ऊपर कथा कोनी pressure, unfortunately, as an organization, as a magazine, I have never faced. We have never faced because we are completely different set of altogether. These are you people, but we do suffer the pressures on editors and what they do. Every night you do suffer on Republic TV or India TV or anything else. Many of them. So, why I'll be speaking a bit more about ourselves is that when environment or development or any other issues that has become highly political, like your water, like your land. Look at Assam and immigration issue. The whole immigration issue and who is an Indian issue now, the currently here. These are all natural resources linked discussion and debates, not only in India, elsewhere also. But how I will actually report on a contemporary subject without understanding, and who is going to give me understanding? So my take is not on the pressure, rather my take is that our editors, the media itself has become less informed and less rigorous. जो प्रकार रिसर्च करी गोटे एडिटर गोटे रिपोर्टर को रिपोर्टिंग ପାଇଁ କରିବା କଥା ସେଇଟା ବୋଧେ बिल्कुल नहीं एडिटर्स मन का रोल definitely I feel that has diluted a lot. Editors have become managers. I am a managing editor actually, so I still proofread pages, but so where are that editorial leadership that actually takes you apart, irrespective of pressures? Where is that intellectual leadership that should define a newspaper or a magazine reporting? For example, I'll give you an example. I'm giving you the example of Delhi. That is supposed to be all the best are happening there. So all the best journalists are supposed to be there. Though they are I think the least concerned journalist you will find in Delhi. Completely out of touch. That's almost become a fact. Stubble burning happens jota harvesting time 20 days. Delhi 365 दिन रे 5 दिन भी मॉडरेट किंबा सेफ लेवल रे नहीं था एयर और जो 5 दिन की 6 दिन सेफ लेवल रे अछि सेटा एग्जैक्टली जेतले वर्षा होता है
किंतु चलला सेटा nobody actually bothered. बाकी 340 दिन रे केमती पोल्यूशन होची nobody bothered कि गोटे फंडामेंटल जिंस गोटे ट्रांसपोर्ट बीट रे जे करथबो से भी जानि परथबो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रो बस नंबर कहीं बढ़ुनी कमुच जदि एते एयर पोल्यूशन एते एटा पई बुझ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एबे एमती परपेचुएट हे गलानी कि इट्स अ पॉलिटिकल इशू पंजाब इज सेइंग कि आई एम नॉट रेस्पोंसिबल हरियाणा सेइंग कि आई एम नॉट रेस्पोंसिबल दिल्ली सेइंग कि वी आर नेवर रेस्पोंसिबल विद इन दिल्ली वी हैव 4-5 गवर्नमेंट्स केजरीवाल मोदी अमित शाह मेनी अदर्स lieutenant governor so then other party. So if you look at it, I think that understanding we have never seen editors actually debating on a issue so that a public crisis can be handled fast. Second, look at it, climate change. Climate change, I think when we talk about, there is hardly any editor who understands climate change or the media understand climate change. It's not to blame ourselves that we are least informed. It's to blame that we have never been actually, in this new generation, we have never been made to understand a crisis at what should be. Somebody was saying that, for do whatever anything, plant trees. I think that's the worst thing to do now. Because you say कि planting tree, plantation is the solution, the forest departments are precisely doing that. So they are clearing good forest and doing plantation also. It's not a Odisha story. It's across the world. Now you have a prime minister who goes and the environment who goes in the international media, they declare that we will plant this billion. It was a mistake. Nobody calculated what does it mean that billion trees. Actually that is more trees than what in the natural forest we have. We don't have space. Industrialization taking place in one state for the compensatory afforestation, they are looking for space somewhere else. So this, what I am telling you is that the understanding, I think that it has been our big concern, is that issues are not being understood. If the media is not understanding and not reporting in the right direction, giving our job is to inform, not giving all aspects, then how the public opinion will form. So the public opinion, look at it, Punjab is responsible, Haryana is responsible. In case of Odisha, Chhattisgarh is responsible for all water crisis in one river. And for the state problem, it's center responsible. So it's, I think that's my point, is that media is definitely, I think this is the best time to be a good journalist, because the credibility is so low that, and that is not the good journalism, I think we should have been there. So that's my experience.